हाय। आज पढ़िया आम वाटर रिसोर्सेस पढ़िया सीबीएसई क्लास 9 सोशल साइंस ठीक अच्छे। चलो देखिए आरंभ कले फास्ट पिक्चर देजी पुटे आमर जो बॉय अच्छे से पिंकी की कहूचे हे पिंकी डिड यू सी दिस एड्स ऑन टीवी रिपोर्टर ऑन द फ्लड इन आसाम अर्थात आसाम जो फ्लड है टीवी रे तू देखी ना देखी न तो कह माय गॉड व्हाट havoc they had created and destroyed and swept away everything in its path। से कहूँ ए जो होता फ्लड हो सब धोई नहीं जाइए से कहूँ यस ये से कहूँ कि पिंकी कहूँ चिंटू को चिंटू आई डिड इज नॉट इज स्ट्रेंज दैट वाटर कैन ग्ली लाइफ एंड टेक लाइफ एज वेल एज तो कहानी अच्छी जो गोटे आमर जो जल जो आम बंचुचे आ जल जो सर्ट होगा भी आम बचानी आउ तो जल जो आम बंचुचे जल जो सर्ट होगा आम बचाने जल जी अधिक है आम भी बची पारे तो तीन टाइप रे जो ओडिया अच्छी गोटे कथा जल बिहुने सृष्टिनाश जल बहुले भी सृष्टिनाश से कथा ये कथा से इंग्लीश कही व्हाट वुड वी डू विदाउट वाटर से कहूँ वाटर जदि नहीं आम वाटर एग्नेस्ट जब वाटर नहीं आम कौन करवा से कहूँ ठीक है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक आम ड्रिंक करने पीवाई कुक करने और फूड जो कुक करने एंड वाश आवर क्लथेस आज वाश आवर सेल्फ आज वेल तो गाधेवाई भी दरकार तो फूड तो दरकार कौन दरकार वाटर तो दरकार माय फादर वाज टेलिंग मी मो बाबा मते कहूले जे ठीक है मो बाबा मते कहूले जे that in his factory there need a lot of water from a number of things बहुत वाटर तक दरकार need a lot of water for a number of things do you know that even need water for cooling the machine तो तू जाने छु कि machine cooling पई water दरकार बेली in fact factory run on power of supplied by the hydro power plant and now I can understand why through the age human have chosen to live near water course along the river and other sources like springs lakes ponds sources. You already know that 3/4 of the earth surface is covered with water आम जाने जे 4 भागरू 3 भाग 4 भागरू कौन कहूँ बाबा 4 भागरू 3 भाग अच्छी वाटर कवर होगी से कहूँ बट ओनली द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अकाउंट फॉर फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट टू यूज अर्थात आम तारू छोट ही पार्ट अर्थात एते वाटर अच्छी ताने आम सफिशिएंट वाटर अच्छी तो आम डेली न्यूज शुणुचे कहीं से वाटर सर्टेज जो ये है दिस फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर दैट इज continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. All water move within the hydrological cycle ensuring that water is a renewable resources मन रख जे शॉर्ट क्वेश्चन पकैला रिन्यूएबल रिसोर्स रे वाटर जीव कि हाँ देख आस यस मारिक आसो ठीक है। यू माइट वंडर दैट इफ 3/4 ऑफ वर्ल्ड is covered with water and water is a renewable resource then how is it that countries and regions around the globe suffer from water scarcity से कहूँ जदि वाटर आमर 4 भागरू 3 भाग अच्छी अर्थर तो केमी आम के शुणुचे न्यूज ना से कंट्री वाटर सर्टेज अच्छी बा से जो रीजन वाटर सर्टेज अच्छे व्हाई इज इट प्रेडिक्टेड दैट by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity अर्थात आम प्रेडिक्टेड करा 2025 सुधा 2 बिलियन लोक एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी से बचे बोली ठीक है। स्कार्सिटी ऑफ तो अभाव तुम जान स्कार्सिटी ऑफ अभाव तो कहूँ से आरंभ करे वाटर स्कार्सिटी एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट से कहूँ given the abundance and renewability of water एत परिमाण वाटर अच्छी रिन्यूएबल भी अच्छी इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट वी मे सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी तो आम एत सब जानूचे भाई 4 भागरू 3 भाग आउथ वाटर अच्छी फिर भी आमको इमेजिन करवा जेबे से जानिया जे भाई वाटर स्कार्सिटी ही हो द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेजेस वी इमीडिएटली एसोसिएट with a region having low rainfall और दोज दैट ड्रट फ्रोट अर्थात से कहूँ जो रेनफॉल कम हो जो ड्रट आसी जाता कथा आम कथा हो वाटर सर्टेज कथा कहले वी इंस्टांटली विजुअलाइज द डिजर्ट ऑफ राजस्थान एंड वोमेन बैलेंसिंग मेनी मार्केट मार्टक्स जोटा आर्थफोर्ट
जोटा कि माठिया कहे यूज फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर एंड ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर ट्रू the availability of water resources vary over space and time mainly due to variation in seasonal and annual precipitation but water scarcity in most cases is caused by over exploration so जो water scarcity कहीं से over exploration जो से excessive uses and unusual unequal access of water among different social groups ठीक है when where is the then water scarcity likely to occur so तो कोठी होउछ से कहूची as you have read the hydrological cycle fresh water can be obtained directly from precipitation, surface runoff and groundwater. It is possible that an area of region may have ample water resources, but is still facing water scarcity. Many of our cities are such example. Those water scarcity may be outcome of large and growing population and conquest greatest demand for water and unequal access to it कहूची कौन कौच आउ थे कहूची मेनी फॉर आम सिटीज रे आम गुड़ाए सिटीज आम भाया आउ गुड़ाए सिटीज रे आर सच एग्जांपल दस वाटर स्कार्सिटी मे बी आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन अत वाटर स्कार्सिटी कहीं होची पॉपुलेशन बढ़िया जो वाटर स्कार्सिटी होची एंड कन्सिक्वेट ग्रेट डिमांड फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट अत से कहूची ए टाउन मानक सिटीज मानक से माने वाटर स्कार्सिटी होउछ बेले हम जानूचे से समर टाइम रे हुए ए लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर मोर वाटर अथ नॉट ओनली डोमेस्टिक यूजेस बट आल्सो प्रोड्यूस मोर फूड से कहूची जे पॉपुलेशन बढ़ी गले तुमको वाटर स्कार्सिटी आसे कहीं आसे डोमेस्टिक यूज करते से माने जब पॉपुलेशन बढ़ुची फूड प्रोडक्शन बढ़िया दरकार जब फूड प्रोडक्शन बढ़ुची तो माने तुमको वाटर भी दरकार फूड प्रोडक्शन आम एग्रीकल्चर पढ़ले जे फूड प्रोडक्शन वाटर भी दरकार से परिमाण जब इरिगेशन सुविधा न हो फूड प्रोडक्शन हो पार ना हेन्स टू फैसिलिटेट हायर फूड गेन प्रोडक्शन वाटर रिसोर्सेस बीइंग ओवर एक्सप्लोटेड टू एक्सपैंड इरिगेट areas for dry season agriculture. Irrigated agriculture is the largest consumer of water. Now it is needed to revolutionize the agriculture through developing drought resistant crop and dry farming techniques. You may have seen many television advertisement that farmer have their ओन वेल्स अर्थात फार्मर मानक निजर वेल अच्छे ट्यूबवेल्स अच्छे देयर फार्मर फॉर इरिगेशन टू इनक्रीज देयर प्रोड्यूस अर्थात निहाती ना गोटे फार्मर जब फार्म करुचे फार्मिंग करुचे कल्टिवेशन करुचे से निहाती निजर वेल रखिबो ट्यूबवेल्स रखिबो न रखले से चाष करि परिबो नै तार पानी शॉर्टेज धरिबो तो से पॉपुलेशन बढ़िबा हेतु लोक संख्या बढ़िबा हेतु पॉपुलेशन बढ़िबा हेतु से कहूची हमर फार्मिंग बढ़ुची फार्मिंग बढ़िबा हेतु वाटर शॉर्टेज धरोची बट हाव यू एवर वंडर दैट दिस कुड रिजल्ट इन अथ या जो कौन हो पारे दिस मे बी लीड टू फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल अथ जदि आम प्रत्येक फार्मर रखुचे ट्यूबवेल्स रखुचे निज जदि ओन वेल्स रखुचे तो कौन हम तो जो ग्राउंड वाटर लेवल वाटर थिला सेटा कमी जीव एडवर्सली अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल अथ ता जो आम कौन हो पार जदि ग्राउंड वाटर लेवलटा कमीगला पानी कमीगला तो वाटर अवेलेबिलिटी हम ना वाटर अनअवेलेबल हम तो जदि फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल कमी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव एंड एग्रीकल्चर and industrialization of urbanization intensive industrialization and urbanization creating vast opportunities for us तो आम बहुत opportunities जानुचे बोले से कहूँ today large industrial houses are the common place are the industrial unit of many MNC तो multinational corporation कथा कहूँ ठीक है the ever increasing number of industries have made matter worse by exiting pressure on the exiting freshwater resources industries apart from being heavy user of water also require power to run them ठीक है much of this energy comes from hydraulic power moreover multiplying urban center with large and dense population and urban lifestyle have not only added to water and energy requirement but have further aggravated the problem तो कहानी टोटाल सिंपली से कहूँ इफ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटी जदि घर सोसाइटीज अथवा सोसाइटी देखा कॉलोनियल सिटीज यू वुड फाइंड मोस्ट ऑफ दिस हाव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस टू मीट देयर वाटर नीडेड अर्थात कहूँ सिटीज मानक प्रत्येक जड़े जड़े मैक्सिममली
प्रत्येक जड़े जड़े निजर ग्राउंड वाटर बसई था से अत से टैप बसई था से थ्रु से यूज करती तो प्रत्येक जन जन एमती बसैले तो यूजेस से बसैले एत किसी मतलब नहीं बट मतलब हूँ ए आमर वाटर सर्टेज पड़ जाए आगे वी फाइंड दैट फ्रेजिल वाटर रिसोर्सेस आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड डिप्लेशन एंड सेवरल दी सिटीज बुझे कथा ओके तो ये गोटे इम्पोर्टाट पॉइंट यहाँ रटल भूजाल योजना अटल जाल कौच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 8220 वाटर स्ट्रेच ग्राम पंचायत इन 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स okay taluks in 80 district 7 state that is Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh. The selected state account for about 37% of total number of water stressed overexploited critical and semi critical block in India. One of the key aspects of the Atal Jal is to bring to behavioral change in the community from the prevailing attitude of the consumption of conservation and water management. ठीक है ये वाला मेन ठीक रहिबो इम्पोर्टेंट रहिबो जीवा available to meet the need of the people but their area still suffer from the water scarcity अत से माने जो टाउन बा सिटीज मानकरे से माने बनई देले निजर निजर ये बनई देले तापरे एमान को शॉर्ट पड़ेला दिस स्कार्सिटी may be due to the bad quality of water. Latterly, there has been a growing concern that even if there is ample water to meet the need of the people, much of it may be polluted by domestic and industrial waste, chemical, pesticide, fertilizer used in agriculture, thus making it hazardous for human uses. Government of India has accord highest priority to improve the quality of life and enhance ease of living people, especially those living in a rural area, by announcing the Jal Jeevan Mission (JJM). The goal of JJM is to JJM पचारिबो रे मन रख रे JJM टा the goal of JJM is also enable every rural household तो प्रत्येक rural household रे get accurate supply of potable piped water at a service level of 55 liter per day per capita per day regularly on long-term basis by ensuring functionality of tap water connection. Source economic survey देइछि ए सोर्स अनुसार हमको मिले you may have already realized that the need of the hour is to conserve the manage our water resources to safeguard ourselves from health hazards to ensure food security, continuation, and our livelihood productive activities also prevent a degradation of our natural ecosystem. Over exploitation and mismanagement of water resources will compromise these resources, cause ecological crisis that may have profound impact on our lives. तो कौन कौन कहला मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्टेड एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हाउ डू वी कंजर्व मैनेज वाटर आम केमी कंजर्व कर मैनेज वाटर कर आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल रेकॉर्ड शो दैट फ्रॉम एंशिएंट टाइम वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स लाइक डैम्स बिल्ट ऑफ सम रुबेल्स रिजर्वर और लेक्स ठीक है से कहूँ आम वाटर मैनेजमेंट कंजर्वेशन कौन करुचे कौन करवा दरकार से कहूँ डैम बनवा कौन करवा डैम बनवा बिल्ट अफ स्टोन लेवल रिजर्वर बनवा लेक बनवा लेक करवा रिजर्व करवा लेक टी डैम बसे कहूँ करवा बोली एम्बानेकेंट एंड केनाल्स ऑफ इरिगेशन पे नॉट सरप्राइजिंगली वी हैव कंटिन्यू दिस ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडिया बाय बिल्डिंग डैम इन मोस्ट ऑफ आवर रिवर्स और रिवर बेसिन ऊपर बसुचल कहूँ डैम कौन व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस कंजर्विंग एंड मैनेजिंग पावर वाटर डैम्स वर ट्रेडिशनली built to impound a river and a rainwater that could be used later to irrigate agricultural fields ठीक है टुडे डैम आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन अर्थात डैम टा इरिगेशन पे आम बिल्ड करना बट फॉर इलेक्ट्रिक जेनरेटर तो इलेक्ट्रिक जेनरेशन पे आम यूज करुचे क्या इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन पे water supply for domestic and industrial uses flood control recreation inland navigation and fishing breed ये सब पे करुचे hence dam are now referred to as multi-purpose
projects where the many uses of impounded water and irrigated with one another. For example, in the Sutlej river basin, Bhakkar Nagal project water being used both for the hydel power production and irrigation. Similarly, the Hirakud project in the Mahanadi basin integrate conservation of water with flood control. ठीक है, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଏଠି ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଲଞ୍ଚ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଇରିଗେଟେଡ୍ ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ were thought as the vehicle that would lead the nation of the development and progress overcoming. ଅର୍ଥ ଡ୍ୟାମ୍ କଥା କ'ଣ କହିଛି ଟିକେ ଦେଖ ଏଠି ଡ୍ୟାମ୍ କ'ଣ କହିଲା ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ୟାରିୟର across flowing water that obstructs direct or retard the flow of often creating reservoir lake and impoundment. Dam refer to the reservoir rather than the structure. Most dams have a selection called a spillway or weir over which it is intended that water will flow either intermittently or continuously. Dams are classified according to the structure, intent, purpose or height. Based on the structure and material used, dams are classified as the timber dams, embankment dams, or masonry dams with several subtypes. According to the height, and dam can be categorized as large dam or major dam, or alternately as low dam, medium height and dam and high dam. ठीक है, handicap of its conical parts, Jawaharlal Nehru proudly proclaimed the dam as the temple of the modern India. Dam को temple of the modern India कहते, temple of the modern India. The reason being that it would integrate the development of agriculture and the village economy with a rapid industrialization and growth of urban. मन रख जवाहरलाल नेहरू कहते किए कहला जवाहरलाल नेहरू कहला एंड कौन कहला ये कहला जे टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया काहाकू बाबा काहाकू कहला डैम मानक. ठीक है, आगो जीवा in recent year multi-purpose project and large dam have come under great scrutiny and opposition for variety of reasons. अतः recent year multi-purpose project and large dam have come under great scrutiny and opposition. अतः opposition करा जाउची डैम मानक एबे से कहया कथा जे opposition करा जाउची mainly regulating and damming of river affect their natural flow, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in rockier stream beds and poorer habit of the river aquatic life. अतः aquatic life पर जो हमर रिवर aquatic life जहाँ भी रहिले तांको ऊपर इफेक्ट पड़ुले से कहबा कथा. डैम्स आल्सो फ्रैगमेंट रिवर. तो ये फ्रैगमेंट कौन कहूँ रिवर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर aquatic fauna to migrate, especially for spawning. The reservoir that are created on the floodplain also submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time. ठीक है. Irrigation has also changed the cropping pattern of the many regions, with farmers shifting with water intensive and commercial crop. भाई agriculture में already पढ़ी छे commercial intensive crop कथा. This has a great ecological consequence like a salination of the soils. प्रधानमंत्री कृषि संची योजना has been started, which ensures access to some mean of protective irrigation for all the agriculture farm in the country, thus bringing much desired rural prosperity कथा कहूँ सरदार सरोवर डैम जोटा कि गुजरात रे हेइथला and Narmada river upare था built over Narmada river in Gujarat. This is one of the largest water resources project of India, covering 4 states: Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan. The Sardar Sarovar project would meet the requirement of water in the drought prone and desert area कथा कहूँ desert area रे and drought prone area रे ये दो. Sardar Sarovar project will provide irrigation facilities to 8.45 lakh hectare of land, covering 3112 villages in 15 districts of Gujarat. It will also irrigate 246,000 hectare of land in the strategic desert district of Balmor and Joler in Rajasthan, and 375,000 hectare in the tribal hill tract of Maharashtra through lift.
About 75% of the command area in Gujarat is drought prone, while entire command of Rajasthan is drought prone. Acquired water supply will soon make this area drought proof. ठीक है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. Some of the board objective of this program are to enhance this physical access of water to on the farm and expand cultivable एरिया अंडर एक्वार्ड इरिगेशन. हर खेत को पानी अथ ये जो थिला हर खेत को पानी प्रधानमंत्री ये कथा कहूँ इम्प्रूव ओन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस वेस्टेज एंड इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ ड्यूरेशन एंड एक्सटेंड इरिगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी peer drop more crop and per drop more crop and introduce sustainable water conservation practices. Do you know that Krishna Godavari dispute is due to the objection raised by the Karnataka and Andhra Pradesh government? अतः कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट जो है कर्नाटक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इट इज रिगार्डिंग टू द diversion of the more water at Koyana at the Maharashtra government for a multi-purpose project. This would reduce a downstream flow in the of the water state with adverse consequences and agriculture industry कथा कहूँ meaning किसी नहीं. These floods have not only devastated life and property, also caused extensive soil erosion. तो फ्लड है से कहे प्रॉपर्टी खाली जाऊनी लाइफ खाली जाऊनी या सहित soil erosion हो. Sedimentation also mean that floodplain were deprived of sleet and natural fertilizers. Further adding on the problem on land degradation, it also observed that multi-purpose प्रोजेक्ट इंड्यूस अर्थक्विक अथवा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो कौन हो अर्थक्विक हो इंड्यूस करोची कॉज वाटर बॉर्न डिजीजेस पेस्ट एंड पॉपुलेशन रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर कथा कहूँ. रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़िया ता सहित आ कौन पढ़िया मुझे कहीदे केमिति रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कोठ करूचे पढ़िया से बढ़िया हो सरजु आमर आ चलो देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीनिंग मोटामोटी भाव में कहले आम जो वर्षा पानी की केमिति हार्वेस्ट करके आम तक यूज करुचे. ठीक अच्छे चलो गोटे पढ़िया देखिए कौन कौन. मेनी थॉट दैट गिवेन द डिसएडवांटेज एंड राइजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज projects water harvesting system as a viable alternative both socio-economically and environmentally. In ancient India, along with the sophisticated hydraulic structures, there existed an extraordinary tradition of water harvesting systems. Water harvesting systems. People had in a depth knowledge of rainfall regime and soil type and developed wide-ranging technique to harvest rainwater, groundwater, river water and flood water in keeping the local ecological condition and their water needs. In hills and mountainous regions, people built diversion channel like galls and pools of the गल्स एंड कूल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय ऑफ एग्रीकल्चर तो चाषबास करने से एमती यूज करते से कहूँ ऑफ हिमालय एग्रीकल्चर. रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली अर्थात छात उपर रूफटॉप हार्वेस्टिंग जो छात उपर प्रैक्टिस टू द स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन राजस्थान रे होछि. इन द फ्लड प्लेन ऑफ बेंगाल्स पीपुल डेवलप इन अंडरसन चैनल टू इरिगेट देयर hills. In arid and semi-arid region, agriculture fields were converted into rain-fed storage structures that allowed the water to stand and moisten the soil like the Khandins and Jaisalmer and the Jhodas in other part of the Rajasthan. In the semi-arid and arid region of Rajasthan, particularly Bikaner, Poladi, Pahalodi and Balmor, almost all the houses traditionally had underground tank अर्थात आंकर underground tank रोथला and tank for storing drinking water. ठीक है. The tank could be
as large as the big room or tank ta बड़ बड़ room भले है तो one of the household in Pohladi had a tank that was 6.1 meter deep or तलुको ହେଇଥିବ 6.1 meter and long ହେଇଥିବ 4.27 meter and 2.44 meter wide ହେଇଥିବ the tank where part of the well developed rooftop rainwater harvesting ଅତ ସେମିତି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିବ rooftop କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି system okay rooftop rainwater harvesting system and were built inside the main house or the courtyard अतः main house रे ही थी main house तले और courtyard so they were connected to the sloping roof of the house through the pipe the pipe द्वारा ताको connect करते rain falling on the rooftop would travel down the जितल छात ऊपर हबा से तळ को जिबा pipe and was stored in the underground tank so the first spell of the rain was usually not collected as this would clean the roof of the pipe the rainwater from this subsequent shower was the collected ता परटा तो फर्स्ट शावर जो हैला ताको कलेक्ट करा जिवो ना सेकंड शावर ता कलेक्ट करा जिवो से कहू द रेनवाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक्स till the rest rainfall making it an extremely reliable sources of drinking water ठीक है when all the sources are dried up जेतले सबजी के सोर्स ड्राइड सुखी जीवो जेतले सबजी के सोर्स सुखी जीवो सेतले का हबो dried up particularly in the summer time rainwater or parlor pani are as commonly referred to in this part is considered the purest form of natural water many houses constructed underground rooms are using the tanks to beat the summer heat as to keep the adapted here Gendataru receive an annual precipitation 1000 millimeter and 80% of the collected efficiency and about 10% filling. Every houses can collect and use about 50,000 liter of water annually. ठीक है? From the 200 houses, the net amount of rainwater harvested annually amount होची 1 lakh कथा कहूची से. Today in Western Rajasthan, sadly the practice of rooftop rainwater harvesting is on the decline as plenty of water is available due to the perennial Indira Gandhi canals तो आउ सेठी करा जाउना Indira Gandhi canal जोगो through some houses still maintain the tank since maintain कर रखिन they do not like taste of tap water सेमाने taste तांग भल लागेनी बेले सेमाने tank use करंती fortunately the many part of the rural and urban India rooftop rainwater harvesting and being successfully adapted to store and conserve water तो water conserve ପାଇଁ use करंतिले से कहूचे in Gendatharu a remote backward village in Mysore ठीक है कोठी Mysore Karnataka village have been installed their household rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs nearly 200 households have installed this system and the village has earned the rare distinction of being rich in rainwater ठीक है see 3.6 figure रे जहाँ भी देइछ for a better understanding the rooftop rainwater harvesting system which is adapted here कथा कहला Tamil Nadu is the first state in India which has made a rooftop rainwater. Tamil Nadu ही गोटिए state first step harvesting states are compulsory for all the houses across the state. There are legal provision punish the defaulter कथा कहूची legal provision अच्छी बोली से कहूची. And एतिकी थला ए विषय रे जदि चैनल तुमको इन्फॉर्मेशन जहाँ भी हमें देइछु ए विषय रे जदि लागुची तुमको भल लागुचे ताहले तमे कौन करि परिबो सब्सक्राइब करो शेयर करो ओके थैंक यू